हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 7 का इंग्लिश बाल भारती लेसन 3.4 द ब्रूक। इस लेसन की इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चन आंसर्स लेकर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीड द पोएम लाउड विथ प्रॉपर पेस एंड रिदम। तो ये आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस। वर्ड और फ्रेजेस का मीनिंग आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वन है रिच हाई एजेस अमंग माउंटेन। उसके बाद है ब्रिमिंग फुल ऑफ समथिंग। उसके बाद है ईडिंग मूविंग फास्ट इन सर्कल्स। बैबल टू मेक अ नॉइज एज इफ टॉकिंग टू मच। फैलो लैंड दैट इज नॉट प्लांटेड विथ क्रॉप्स। उसके बाद है ट्राउट a brown fish that lives in rivers or lakes. After that, knitted like a net. Question number 3, answer the following. उसमें फर्स्ट है हु इज द स्पीकर इन दिस पोयम। पोयम में स्पीकर कौन है? आंसर द ब्रूक इज द स्पीकर इन दिस पोयम। विच लाइन्स आर रिपीटेड इन द पोयम? व्हाट डू यू मीन? पोयम में कौन सी लाइन रिपीट हो गई है और उसका मीनिंग क्या है? Answer, the line repeated, for men may come and men may go, but I go on forever, meaning these lines indicates that the river lives much longer than human beings. After that, where does the brook join the river? Answer, the brook join the river by Philip's farm. Mention the various places that the brook flows past. तो ये है आंसर। आफ्टर दैट, फाइंड नंबर क्वेश्चन, ऑफन द ब्रूक स्पीक्स इफ इटसेल्फ एज इफ इट इज ह्यूमंस। फॉर एग्जांपल, आई बाइकर डाउन अ वैली। फाइंड टू अदर एग्जांपल ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ द ब्रूक। सो ये है आंसर। आफ्टर दैट, क्वेश्चन नंबर 4, स्पॉट एंड राइट एनी 3 alliterative phrases or sentences from the poem. Alliterative phrases or sentences are those in which same sound is repeated. So this one is the answer. Okay. Next question. Question number 5. List the prepositions you find in this poem. So ये सभी है प्रीपोजिशन जो पोयम में हमें फाइंड आउट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर, लिस्ट द फ्रेजेस विच हैव द एक्सप्रेशन मैनी अ। तो ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 7, द पोएट यूज वर्ड टू क्रिएट पिक्चर और इमेज इन द रीडर्स माइंड। फॉर एग्जाम्पल, एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर, राइट डाउन अदर लाइन्स दैट क्रिएट इमेजेस और पिक्चर in your mind, any 3, okay? By 20 torps. उसके बाद a little town and half a 100 bridges. After that, by 30 hills I hurry down. Fourth one है I make the knitted sandbeam dance. After that, against my sandy shallows. Number 8, write a short autobiography of a Brook, 20 to 30 lines. Okay, short autobiography Brook की राइट डाउन करनी है 20 to 30 लाइन्स में। सो ये है। इसके बाद भी एक पेज दिया है मैंने। ओके, ये आंसर यहां तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन which other things in nature can say, for men may come, men may go, but I go on forever? So answer, the sun, stars, clouds, moon, wind, space are things in nature that can say the given lines. Question number 10, use the internet, your school library or other sources for following activities. फर्स्ट वन है ट्राई टू फाइंड अदर नेचर पोएम्स, ड्रॉ और कलेक्ट लैंडस्केप दैट कैन बी यूज्ड एज इलस्ट्रेशन फॉर दिस पोएम। आंसर, यहाँ पे फर्स्ट वन ट्रीज की पोएम है, देखो
ओके. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. इयत्ता 7वीच्या मराठी, सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा.